Okay, we have to start now. It is already 7:02. Please, who have to, and you have to, if other students are also coming, please give your name and the roll number in the chat box. Actually, in this semester, actually, I have to take two classes. So mostly I will try to cover the basics one for the CS-042. The paper name is Computer Communications and Networking. So in this one, just I have to share the first PPT and let's start. Okay. You can view now. You can Yes, view sir. computer Yes, sir. communication. Okay. Actually, the important thing is that in this paper, actually, there will be some numerical questions will be also be there. The time is actually very much syllabus. Maybe actually we need nearly 30 classes to cover the whole syllabus. So my objective will be I will be little bit faster and I have to deliver fast and I will try to cover as much as possible. Okay. If you have any doubt, you just please ask me. The first thing that is Okay, the sir. okay. So first thing that is the networks. How we have to define the network. Network are an interconnections of two or more computers. So there are if the two machines or two devices are connected, and if they can share their resources and informations, we can say that two devices are in a network. In a no doubt, the networks may we have to use some link to connect to devices. So in this one, it may be cable, it may be telephone line, it may be through satellite. So by somehow we have to use some link to connect to devices. So we can define it like in this way. Autonomous computer means it can take its own decision. अपना decision ले सकते हैं. It can autonomous machine. A computer network is an interconnected collection of autonomous computers. So in this one, two computers are interconnected if they are able to exchange information. तभी हम लोग बोल सकते interconnected. If they are able to exchange the informations, then I have to say the two devices are interconnected. Otherwise, I will not use the term interconnected. And the autonomous, when we have to use the term autonomous, the two computers are autonomous if they are capable of operating independently. That is neither the capable of forcible starting, stopping, or controlling the other. This is the autonomous machine. My laptop I am using, this is the autonomous one. You are using your one. You are sitting in front of your maybe your laptop or in front of your mobile device. So that is also autonomous. You will decide when I have to start it, when I have to stop it, like on that. So in this one already computer network we can define it like in this way: a collection of machines or devices that communicate with each other over some communications medium. Two machines are directly connected. They can communicate through their other machines. I'm not exploring the definitions anymore. Number of how we can define the protocols. Protocol कैसे define करोगे? Now rules for communications between two communicating entities. दो device है. If the two devices are trying to communicate, then I have to say we are actually we are following some protocols. So in the real life also, when I have to communicate, I have to maintain some protocols. I cannot enter my head of the department's room without her consent. I have to maintain some protocol. First, I have to knock at the door. Then, if she is giving the permission, then I have to enter. Then I will not going to express the problems. Maybe after she is asking, please sit in, take your seat. After that, I have to deliver. When she is asking me, what is the problem, Chinmay? Then at that moment, I have to deliver.
So in this one, हम लोग भी देखोगे, if you look at there, we are also maintaining the protocols. देखो at this moment also, if I am delivering the lectures, you are listening. आप ध्यान से मेरा बात सुन रहे हो. When you have to ask the questions, then at that moment I have to stop. हमको रुकना था. First I have to listen your questions, then I have to give you the answers. So for any communications, always we need the protocols. I have to maintain the protocol. And no doubt, and two devices have to communicate. They have to understand, must speak the same language. दोनों डिवाइस में सेम लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा. They have to talk in the same language. So no doubt, and we have to maintain the syntax and the semantics and the time of the communication. If I have to deliver my lectures, if I am using the Hindi or I have to use the English, I have to maintain some sentence syntax. We have to maintain. Otherwise, we will not able to understand me. And semantics होता है that all the sentences should be related. Sometimes if I am not able to maintain the semantics, so maybe I am saying one line from this book, next one line from other books, next one line from any other books, then we will find so there is no semantics, there is no continuity. Some sentence I am saying, sir, I have to go to the Bombay. Next sentence I am saying, today I have to, this is my important job, I have to do this one. Next I am saying, Narendra Modi is doing this one. देखो semantics नहीं हो रहा. That is, there should be to pass informations. All the information should be related to some topics. Otherwise, we will not able to maintain the semantics and timing of the communication. So, देखो, it is, this is the sender 1, this is the sender 2, and this is the message I have to pass. So in this one, I have to sending some informations. I am using some medium. I have to maintain the protocols. This is the, if someone is sending, this is the transmitter part. So this is the receiver part. It is working like in this way. Is it okay? Are you getting me? Yes or no? Yes, sir. Okay, sir. So first already I have defined, sir, in this one I have to maintain, when I have to maintain some connects, in just a second. So that is already you are able to get the definitions of the protocol. प्रोटोकॉल में क्या रहेगा, सबको दिखाई दे रहे? कैन यू पेन ब्रश ओपन किए, दिखाई दे रहे? Yes, sir. Okay. हाँ, दिखाई दे रहा है. In a protocol, actually, what we have to maintain? Yes, sir, in this is a set of rules. No doubt. जब हम लोग communicate करते हैं, if I am communicating, set of rules. देखो, कोई तुमने simple एक applications you are writing. Yes, sir, I have to take a leave. You are maintaining some protocols. To लिखते हो, उसके बाद space छोड़ के subject लिखते हो. You are writing the subject. Then space छोड़ के, then again you are writing the body part. So actually, when I have to write an applications, at that moment also, I am maintaining the set of rules to write an applications. So this is the always we have to maintain the protocols. And in this one, no doubt, to communicate, I need the syntax. So आपको ये करना ही पड़ेगा. And the semantics चाहिए. I have to maintain the semantics. Already I have defined that part also. Who is transmitting? That is the transmitter. जहाँ से transmit होगा, that is the transmitter. जहां से रिसीव होगा, that will be, there will be one receiver will be there. एक रिसीवर भी रहना चाहिए. एक ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, one should transmit, and there should be some receiver जो रिसीव करेगा, that will receive the data. And I have to maintain some protocols. देखो, some protocols का नाम बोल सकते हो? एक दो प्रोटोकॉल तो सबको ही पता है. एक दो प्रोटोकॉल का नाम. IP protocol. Which protocol? IP. Internet. IP protocol.
Yeah. That is very popular one is the HTTP. Every day we are using, every time we are using. When we have to browse, we are specifying HTTP protocol. Yeah, another one is FTP, file transfer protocol. FTP, very good. That is one is the FTP. There is some protocol like the telnet. Telnet. In the different layers, there are different types of protocols are there. Different layers, different types of protocols. The HTTP, देखोगे actually in this one, actually, if you have to look at here, in the HTTP protocol, there is some web server is there. There is a web server. There is a web server, and there is some client machines. Client machine. From the browser, they are sending the request. They are sending a request. Sir, I need yahoo.com homepage. I need, so this is the Yahoo. The yahoo.com ka homepage I am asking for. I am sending a request. Please give me the yahoo.com homepage. And I am sending you the response. I am sending you the response. How I have to communicate? Sir, in this one, I am using the protocol. Which protocols I am using? Sir, I am using the HTTP protocol. Hypertext transfer protocol I am using to communicate with from the browser to the web server. Maybe this is the yahoo.com web server. This is the web server of the yahoo.com. So I am sending the request. I am getting the response. If it is not found, you are asking for a file. This file is not with myself. So I am at that moment, sometimes I am sending you 404 not found. At this moment, I am sending 404 not found. Sometimes also you are receiving this message. मिला है ना, कभी कभी मिलता है ना, जो 404 not found. Yes. Yes or no? Yes. Yes, sir. 404 actually I am sending one request to the web server. Please mute karo. I am sending one request to the web server asking for a file. Just give me this file. But this file is not with the web server. That file is not available. But actually, in this one, network में आप देखोगे, if you look at the networking का, the internet actually popularity, the internet get the popularity from the 95 onward. Before that one, the popularity was not so. The popularity was very poor. But suddenly, the popularity increased. This is the year 1994, 1995. From that onwards, the internet popularity has increased tremendously. Before that one, from the 1982, already TCP/IP protocol is there, but the popularity was not so much. Internet get the popularity from the 1994-95. Actually, at that moment, we have get www. This is one service, World Wide Web service. Where you can search anything. You are searching for some resources. If this resources is already available, you will be able to get it. And that help us immensely. So from the 94 onwards, we get the popularity of the internet. So in this one, again, just I have to discuss the first I have to define the LAN. Already you have the idea. What is the LAN, what is the MAN, and what is the wide area network. LAN is the computers are geographically close together. That is the same building. If the network we have to maintain with a very short distance, within a building or within a campus. At that moment, we are using that network. That is, we have to say we are using the LAN infrastructures. And when it is within the town or a city, then at that moment we have to say we are using the infrastructures of the metropolitan area network, MAN. And sometimes maybe we are getting for the hotel TV connections, broadband connections.
they are using actually metropolitan area network infrastructures, MAN. And for the internet, we are using the wide area network. These computers are further apart and connected by telephone lines or radio waves across the country or maybe intercontinental. And there is now recently we are using something like the PAN, personal area network. If you are using the Bluetooth or maybe you are using the hotspot, at that moment we can specify actually we are using the PAN, personal area network. The mainly type of computer network देखोगे, you will able to find yes sir there are 3 or 4 types of. Okay, आप लोगों के सामने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते. लेट मी डिस्कस फॉर फ्यू मिनट्स. सभी ने पहले फर्स्ट लिसन माय वर्ड्स. आई हैव टू गेट 2 क्लास. 2 क्लास हमको मिलेगा. आप अभी चीजें हमने स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली मे बी हमने फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. आई विल नॉट एबल टू कंप्लीट द फर्स्ट चैप्टर्स आल्सो. द सेकंड ऑप्शन आई हैव जे मे बी इन द सिलेबस if there are 10 chapters are there, so which part is important? Already have you received the books? आप लोगों का किताब मिल गया है already for the computer network for this CS-042? सर ऑनलाइन से डाउनलोड कर लिए हैं सर. Okay. सर ऑन डाउनलोड किया है सर इग्नू की वेबसाइट से सर. जी. Okay. तो देखो मेरा आई हैव ओनली 2 ऑप्शन. हमको 2 क्लास मिलेगा. आज का क्लास मिलेगा, कल का क्लास मिलेगा. इफ यू आस्क मी जी सर आप पहले से जैसे स्टार्ट किए हैं अब कवर कीजिए जितना हो सके, तो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. और सेकंड ऑप्शन हो सकते सर फॉर द ईच चैप्टर आई विल डिस्कस विद यू. देखो दिस इज द इम्पोर्टेंट. जहां जहां पे आपको थोड़ा सा समझाने का जरूरत है वो वाला समझाते हैं. जो थोड़ा सा मैथमेटिकल है आपको समझ भी पाओगे. ये ऐसी भी नहीं है जैसा फर्स्ट चैप्टर किए नहीं आई विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सेकंड चैप्टर. इट इज नॉट लाइक ऑन दैट वे. What I have to deliver, you will able to get it, but you can opt for that one also. जैसे सर आप बोल दीजिए फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में क्या क्या पढ़ना है. What I have to cover. And later on maybe I will give you the PPT. Some PPT हम आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं. ये देखो in this PPT if you go through this one, minimum 60% or 70% of your syllabus already I will able to cover within 2 days. तुम आप लोग बोलो, you kindly ask me, sir what I have to do. सर इम्पोर्टेंट वाला करा दीजिए सर. ओके. इंपॉर्टेंट जो होगा कारण उसमें जहां जहां पे आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशंस रहेगा एवरी टाइम इट इज कमिंग लाइक ऑन दैट वे जो एकदम सभी जो एकदम बार बार आता है इट इज कमिंग. उसको कवर कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा. ठीक है. यस सर. ओके. और आप लोग को इंग्लिश एंड हिंदी में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना. आई हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश. नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. हिंदी सब जानते ही हैं सर ऑलमोस्ट हम तीनों. Okay, if anyone of you have the problem, then you can ask me. Okay. Okay, let's start. चलो हमने पीपीटी एक एक करके फटाफट दिखाते हैं. जहाँ जहाँ पे जो वाला इंपॉर्टेंट है पहले वो वाला बोल लेते हैं कारण ऑलरेडी. अच्छा दिस एक्चुअली आई एम फाइंडिंग देयर आर 4 स्टूडेंट्स आर देयर एक्चुअली. ऑल द 4 यू हैव द ऑलरेडी बीसीए बैकग्राउंड. नो सर. नो सर. I'm अच्छा from अमन BSc Computer Science background. श्रेया Yeah, BSc Computer Science. बीएससी कंप्यूटर साइंस. आर महाना. माइन इज कॉमर्स बैकग्राउंड. यस सर. कॉमर्स बैकग्राउंड. सब कॉमर्स. ओके. जी. शुभेंदु. Shubhendu, your background? So please kindly you have to write your name and roll number in the chat box. Sir, BTech mechanical. Okay. Please, I have only one request that you kindly write your name and the roll number in the chat box. Okay, sir. Okay. Actually from there we have to take the attendance. ओके चलो फटाफट हमने चलो पीपीटी में जो जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा बोल देते हैं आपको तो इजी भी हो जाएगा. इट विल बी इजियर फॉर यू.
In this chapter, the important is that फर्स्ट आप लोग फर्स्ट तीनों टाइप का डेफिनेशन देख लीजिएगा. प्लीज गो थ्रू दिस थ्री डेफिनेशंस, 3 or 4. व्हाट इज लैन, व्हाट इज मैन, metropolitan area network, what is the wide area network WAN, and there is another one, what is the PAN, personal area network. In the first book they have to already specify that part. And the second part is very important, is the topology. Usually every year we are getting some questions regarding the topology. Topology में actually क्या, what we have to cover, sir, what will be the geometrical positions of the node? What will be the geometrical positions of the node? Node का position sir कैसे होगा? Based on that one. जैसे geometrical positions कैसे होगा देख लेते हैं. देखो in this one, this is already I have covered LAN and metropolitan network का सब कुछ advantage हमने बोल दिया, disadvantage बोला. LAN और WAN के difference बोल दिया, what is the difference between LAN and WAN. And next is there is another one very important, is that what is the intranet and what is the extranet. Please go through that one. इंटरनेट एक्सट्रानेट पूरा अच्छे से देखोगे. इंटरनेट में क्या होता है, लिसन माय वर्ड्स, दैट इज ए प्राइवेट नेटवर्क. किट यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क है दैट इज द इंटरनेट. इट वर्क्स लाइक इंटरनेट बट restricted for employees of the organizations only. Only the KIT students and the KIT employee can access. At that moment, I will say this is the intranet. The first one, that is the first point you have to remember, it is a private network. First point. And the second point, you please remember that it is works like internet, but only handful of persons, restricted. Only faculty and the students and the employees can only access that. So why I have to use this one? Now, look at TCS का जो network है, I have to say this is the internet. In the Tech Mahindra, there is one office is there. In the Tech Mahindra, what network they are using, I have to say this is the internet. Used for facilitating internet email, sharing data or informations, scheduling meeting and appointments, disseminating forms, enabling employees to communicate and work together in projects. For that purpose, we are using. Mainly internet, this is a first sentence we have to use, this is a private network. Second one, it is works like internet but restricted for the employees of the organizations only. This is the internet. And I have to say extranet, an internet that is least partially accessible to authorized outsiders. In the internet, only few, I am giving the access to the other organizations also, but that is also restricted. Maybe TCS has taken a project to develop student information system for KIT. Now, few employee of the TCS, they are accessing some of our resources, our database they are accessing. Then at that moment, I have to say this is the extranet. Some persons are working in the TCS, but maybe they have got one project from the USA. The USA का that company का से कुछ हमको उसका resource व उसका server I am accessing. Then at that moment I will say, yes sir, actually I am using the extranet. The extranet is that, yes sir, in the internet, if some resources are accessed by the outside the organization, some pupils are accessing this one using their security code, then at that moment I can say this is the extranet. Usually accessed via the internet. Internet through से access करते हैं, we are using the internet. But at that moment, maybe they are providing me some IP address, maybe they are providing me some server name. And when I am giving the server name, they are asking me user ID, password. I am giving that one, and after that I am able to log in. This is the one is the intranet and one is the extranet. Is it okay? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next. So topology. Topology, every time we are getting some questions in every year, you will find from the topology. One is the mesh, star, tree, bus, ring. Easy है, आप लोग समझ सकते हो. Look at here. This is the star topology. It will look like in this one. There will be a central computer, and all these machines are connected. Now, most of the office में you will find you are using this star topology. Very popular. पूरा KIT university में all the hostels they are using the star topology. There will be one switch. From the switch, you will find lots of cables are coming out, and that cables maybe I am sending to the each message, and all these machines are accessing by able to share their information and data using that
switch. I have to say this is the start topology. There will be one central hub through which all the components are connected. It is the architecture is look like in this one. Very popular. Most of the office, 99% office in the Bhubaneswar mein all are using the start topology. In the advantage, it is looking like in this one. कोई साइबर कैफे में जाइए, if you go in any cyber cafe, they are using, there is one hub, देखोगे there is one device, green light is blinking, and all the machines are connected with this one. Then I have to say this is the start topology. आप इसको पढ़ सकते हो, इतना हमने ज्यादा कवर नहीं कर रहे. एडवांटेज डिसएडवांटेज एकदम अच्छे से देखिएगा. Look at here. If any computer fails, the remaining network is unaffected. No doubt, एक कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है. हॉस्टल में एक लड़का का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, द नेटवर्क विल नॉट बी अफेक्टेड. हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, देखो जितना डिवाइस रहेगा, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज द स्विच 5. एक्चुअली देयर आर 5 नेटवर्किंग डिवाइसेस. इफ देयर आर 5 नेटवर्किंग डिवाइसेस, हाउ मेनी केबल्स you need the 4 cable. Actually for that purpose we are saying only n-1 lines are required for connecting n nodes. जब भी देखोगे 6 मशीन जोड़ोगे तो 5 केबल का जरूरत होगा. इफ यू आर एडिंग 10 machines, then there will be 9 cables are required. But if in this one, disadvantage is that if there is a problem in this hub, if the central device is malfunctioning, so I will not be able to access the internet. So this is the disadvantage. Start topology. This is the ring. Ring topology is look like in this one. There is a cabling. There is a backbone cabling, and there all the stations are connected using some repeater. Repeater का काम रहेगा जैसा उसका, it is mainly we are using to magnify the signal strength. सिग्नल स्ट्रेंथ को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए, उसका सिग्नल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए we have to use the repeater device. We are using this device, repeater. The repeater का एक्चुअली क्या होता है, most of the signals when I have to transmit it, so maybe due to some resistance signal strength आपका कम हो जाता है. Signal strength is decreasing. Look at here. Signal का strength you will have, जब भी transmit करोगे you will find the signal strength now like in this one, after certain time you will find your signal strength is like in this one. To increase the signal strength, I have to use the repeater. I have to use one repeater. There will be input like in this one, and it will be improved like in this one. This is the function of a repeater. Okay. There is a, already I have defined the ring topology. Already I have defined the star topology. Something is the mesh topology. Mesh topology, it is looking like in this one. Just look at here. Mesh topology, it will look like in this one. All the devices are connected with the cables. सभी जितना रहेगा. Mesh topology, it is looking like in this one. Sir, this one, this. So this one, this, and this. So this one, this. So I will say this is the mesh topology. No doubt the problem is that these are in the real life actually we are not using this one, usually for domestic purpose. But actually sometimes for the industrial purpose or for some organization, sometimes we are using for distributing the server. Server distribution के time में we are using this one. The mesh topology में actually problem देखो. In the hostel में, if there are 1000 laptop is there, so I cannot connect all the laptops with all the laptops. So each laptop will be connected with all the laptops in the hostel. It is not possible. So what I have to, so I cannot use it in the hostel or in the organizations, we cannot use it. Where we can use it? So usually we have to use it, so for like the SBI ka servers. Maybe SBI server we have to place in the 4 cities. Maybe it is I have to place it in the Kolkata, one I have to place it in the Mumbai,
I have to place it in the Chennai, and I have to place it in the Delhi. And all the machines are connected with each one. All the machines are connected with each one. So if maybe the problem is in the Delhi server today, the SBI customers will, the other 3 servers will able to handle the situation. Other 3 servers will able to handle the situation. Usually we are using this topology when we need a 24-hour service, 7 days a week. At that moment we have to use this type of topology. But this is a very costly one. This is a very costly. Today if I have to add another one in the Bangalore, then it is a very huge job for us to connect with the Calcutta. I have to connect with the Mumbai, I have to connect with the Delhi, and I have to connect with the Chennai. All the 4 cabling. It is very costly. But maybe sometimes for the purpose of in prospect of if I'm looking at the business side, and I have to getting the money for the ATM services or sometimes some other services, at that moment that revenue I have to use for the quality of service I have to maintain. So at that moment I will spend that one. Otherwise we will not use it. जहाँ पे आपको बोली दे रहा है, जहाँ पे आपको जरूरत होगा, sometimes you need 24-hour service. 24-hour service आपको जरूरत होगा and 7 days a week. At that situations you prefer that one. Otherwise not. At that situations you can use that one. Is it fine? इतना तक सबको समझ में आया है? Start topology, mesh topology, and already I have defined the ring topology. Okay? Yes, sir. सभी का एडवांटेज या डिसएडवांटेज देख लीजिएगा, पूछा जाएगा तो यूजुअली वी विल आस्क यू. सबको दिखाई दे रहे? मेरा पीपीटी दिखाई दे रहे? Yes. हेलो? Yes, visible. ओके. सो रिंग टोपोलॉजी सभी का एक ही क्वेश्चन अब यूजुअली वी आर आस्किंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच वन. दिस इज द बस टोपोलॉजी. This is the bus topology. This is one line and all the machines are connected like on that. Okay, this is the bus topology. Just a second. So this is the bus topology. Bus topology कहाँ पे use? Where we can use it? Bus topology. एग्जाम्पल बोल सकते हो? So usually देखोगे होटल का भुवनेश्वर में, if you look at भुवनेश्वर में देखोगे there is a cable TV service. Cable TV में actually we are using this bus topology. All in each house we have to someone is asking for the cable TV connection. So I am just giving I am using some tap to connect with that house, and I am able to connect like on that. In this one we can use the bus topology. सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज ही पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं. And this is the mesh. All the devices have to be connected. Very costly, but actually sometimes we need it. जब आपके पास सर्विस चाहिए, you need a service 24 hours and 7 days a week. Today I have to take the backup of the Delhi server. All the other servers of Chennai, Calcutta and the Mumbai servers can handle. SBI का सर्विस, ATM सर्विस कभी भी बंद नहीं कर सकते. Maybe due to some fire or maybe some earthquake, maybe today Mumbai server खराब हो गया, it is out of service. At that moment the other servers can handle, and the data is also there. Also there is already data backup is there.
So if something is happening in the Mumbai server, I will not face any problem. So at that type of infrastructures, when you need, you can use the mesh topology. चलो टोपोलॉजी में ज्यादा टाइम नहीं यूज करेंगे. दिस इज द ट्री टोपोलॉजी. We are using the multiple star topology. Then we have to say this is the tree topology. Actually, in the KEET university, we are using the tree topology. There are multiple hub. From this hub, again some hub is there. The network is like on that way. This is the tree topology. This is the hybrid topology. There is some star. There may be some bus. This is the hybrid topology. देखो star backbone with 3 bus network. एक स्टार का बैकबोन है and in this one I am using this. This is analog signal. This is a digital signal. Analog signal look like in this one. Digital signal is look like in this one. दोनों का characteristics थोड़ा सा देख लीजिएगा. This is a parallel transmission. थोड़ा fast बोल रहा है. Okay. This is a parallel transmission. Parallel transmission, it is looking like in this way. एक साथ there are 8 bits we are sending. I am using the 8 lines. And parallelly, I am able to transfer all the 8 bits when 1 byte at a time. Maybe 1 byte, maybe 2 byte, maybe 4 byte, based on the which devices I have to use. Then based on the architecture, based on the infrastructures, we will able to decide if the parallel transmissions whether I have to send the 8 bit or 16 or 24, like on that way. Serial transmissions, it is looking like in this way. 1 bit by 1 bit, I have to transfer. This is a serial. This is a peer-to-peer. Those 2 stations are connected, and this is a dedicated link. No other devices will use this one. Sometimes in the printer we are using. From my laptop, I am using 1 cable. If I am using the connection like on that, I am using 1 cable, and my printer is connected with the cable. I have to say peer-to-peer. Sometimes we are using in the this peer-to-peer connection, and कहाँ पे यूज करते हैं और कुछ आइडिया? बोलोगे? और एक दो एग्जांपल peer-to-peer जहाँ पे डेडिकेटेड लिंक यूज कर रहे हैं. We are using the dedicated link. For giving a presentation using the projector, I am using the peer-to-peer. From my laptop, 1 cable is connected with the projector. What I have to clicking on the link, anyone can view it. Is it okay? Is it fine? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Peer-to-peer, just a definition पूछा जाएगा. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं. जो सर्वर का साथ जो workstations connected रहते, this is a peer-to-peer. Just आपको sometimes we are using the link that is without cable also. We maybe use the satellite link, or maybe some antenna. We are using. देखोगे आपका कभी कोई बिल्डिंग का कोनो आपको दिखाई देगा. You will able to find this type of this one. So there should not be any building between these two. So they will have to line of sight. So बोला है LOS लिखा रहता है. Line of sight में रहना चाहिए. I am able to transmit minimum 200 meters or 400 meters from using like on that way. 200 से 400 meter. High speed transmissions is possible if this one is very strong one, the sender and the transmitter, and the receiver is very strong. Then we will able to transmit it like in this way. So this is also peer-to-peer connection. The 2 machines are connected like on that way. Actually, maybe the cabling will be costly. Maybe cabling is too high. I am installing this one transmitter, 1 receiver. But the problem is that it will be line of sight में रहना चाहिए. If there is some another flat is coming, now maybe it will hamper the transmissions. It will disturb it. This is a multi-point connection. This is a multi-point connection. Sometimes in the lab we are using this connection. 1 cable is there. With that cable I am connecting. Usually, rarely at this moment we are using. Maybe in the industry they are using this one. But in the academic institute we are not using this one. We are using the star topology. But in some organizations we are using this one. Like in this. All machines are connected. And at that moment they need the synchronizations. All the machines are connected with the server. Everything I have to perform with the server. At that moment we are using the multiple.
Well, आपको already you have the idea regarding the simplex, half duplex, full duplex. Simplex में क्या रहेगा? One sided. Radio, TV. You already from the radio they are transmitting the signal. I am receiving it here. In the TV, transmitting is from the TV station. I am receiving it here. This is the simplex. Only in one direction. एक ही डायरेक्शन में रहेगा. Simplex. Half duplex, at the time T1, maybe one server is transmit. At the time T2, the other server is transmitting. So देखोगे जो walkie talkie. In the walkie talkie in the movie you will find in some war movie someone is using the walkie talkies, sending some message and over. They are saying over means I am now. You have to transmit now. So this is the in the police also देखोगे in the car they are sometimes they are using the walkie talkie. So this is the half duplex. At the time T1 someone is transmitting. At the time T2 another one is transmitting. Half duplex. And there is another one is the full duplex. Full duplex में क्या होगा सर? It in the both direction we can transmit at the same time. ठीक है. बाकी सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस एक बार देख लीजिएगा डेफिनेशन. जो चीज आपको इम्पोर्टेंट है हमने वो वाला थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं. लिटिल बिट मैथमेटिकल है जो कि आपको इजी भी होगा बट आपको क्वेश्चन हट एवरी ईयर वी आर गिविंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया. Digital to digital transmissions. Every year we are usually giving this from this area. एक क्वेश्चन दिया जाता है आपका असाइनमेंट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम हियर. तो आपको चलो इसको समझा देते हैं. इट विल हेल्प यू. Digital to digital. First let me discuss. Sir, in this one देखो if there are two devices, two machines are there. Listen my word. Two machines are there. दो machine है आपका पास. I have to transmit hello this word from to here. How we have to transmit? This is the sender. This is the receiver. सबको दिखाई दे रहा है? यस सर दिख रहा है. Okay. दिख रहा है सर. सेंडर से सेंड करना था हेलो रिसीवर का पास. But actually using this is a link. This is one link I am using. Usually this is a cable. Through a cable, I cannot send HELLO ऐसे उसको send नहीं कर सकते. You are also agree with me. हम इसको send नहीं कर सकते. कोई ASCII characters we cannot transfer using a wire. हम लोग इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते सर. तो सर आप क्या करोगे? बोला चलो एज का तो सर ASCII कोड है 101101 लाइक इन दिस. आपको भी पता है इन द कंप्यूटर ऑल द कैरेक्टर्स एक्चुअली रिप्रेजेंट बाय सम 8 बिट से रिप्रेजेंट होता है. 8 बिट से रिप्रेजेंट होता है. चलो 1010 सर इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं. हम बोला सर 1010 भी विद इन ए लिंक विद इन ए केबल आप कैसे ट्रांसफर करोगे? केबल का थ्रू से कैसे 1010 ट्रांसफर होगा? बोला नो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो बोला जो ठीक है सर 1010 का एक सिग्नल बना लेते. 1010 का सर एक सिग्नल बना लेते. इफ यू हैव टू कन्वर्ट इट इन ए सिग्नल देन इट विल बी इजियर फॉर अस. सिग्नल को यदि ट्रांसफर कर सकते हैं एट द रिसीवर एंड वी विल एबल टू डिकोड एंड एबल टू आस्क यू सर व्हाट इज द वैल्यू. तो अभी जो पढ़ाने के लिए यार आप लोग हर टाइम एवरी ईयर वी आर गिविंग सम क्वेश्चन सम स्कीम्स to convert digital to digital. Digital to digital means there is a digital data. I have to convert it into digital signal. Digital signal बनाना था. डिजिटल है उसको डिजिटल बनाने का क्या जरूरत था? एक्चुअली देखोगे कोडिंग ये देखोगे डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग. द नेम ऑफ द चैप्टर इज दैट डिजिटल टू डिजिटल ट्रांसमिशन. एनकोडिंग का ये था डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग. सर डिजिटल है डिजिटल बनाओगे क्यों? ना सर एक्चुअली द इम्पोर्टेंट इज दैट आई हैव टू ट्रांसफर इट इन द कुछ सिग्नल बना लेंगे. आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिग्नल. देयर आर 4 ऑप्शन. डिजिटल से आप डिजिटल बना सकते हो. एनालॉग रहेगा. आई एम टॉकिंग इन नाउ इफ आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर्स एक्चुअली एनालॉग सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम माय ह्यूमन वॉइस इज एक्चुअली एनालॉग सिग्नल निकलते हैं. एनालॉग से तुम डिजिटल बना सकते हो. डिजिटल से एनालॉग बना सकते हो.
और एनालॉग से एनालॉग बना सकते हो। देयर आर 4 कन्वर्जन मेथड। अभी भी बोल दे रहे, इफ यू गो थ्रू दिस 4 टाइप का कन्वर्जन ठीक से देखोगे तो आपको मिनिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन यू विल एबल टू गेट इट every year. Actually some questions is coming from this area, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। तो तुम्हारे पास 2 टाइप का सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। ह्यूमन वॉइस होता है एनालॉग सिग्नल। कंप्यूटर का पास जो देखोगे जो सिग्नल रहता है, समटाइम्स वी आर यूजिंग सम स्टैंडर्ड्स, दे आर यूजिंग द डिजिटल सिग्नल। हाई डेफिनेशन टीवी, एचडी टीवी, सर डिजिटल सिग्नल आ रहा है, उसने सेट ऑफ बॉक्स लगाया था। सेट ऑफ बॉक्स यूज करके हम लोग डिजिटल सिग्नल बना लेते। आई एम यूजिंग आपको फर्स्ट वन, दिस इज डिजिटल टू डिजिटल पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आई हैव टू गिव यू सम बीट, आपको सिग्नल बनाना है। तो आपको पता चल गया मेरा सिस्टम में क्या होगा। इनपुट क्या लेंगे, 1 0 1 1 0 1। आई हैव टू सम सीक्वेंस ऑफ बीट्स हमको लेना था इनपुट, और मेरा स्कीम क्या करेगा, इसको सर कन्वर्ट करके सिग्नल बनाएगा। इट आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल सिग्नल। सबको समझ में आया क्या करना है। डिजिटल टू डिजिटल मीन सर ऑलरेडी इट इज डिजिटल, तो डिजिटल में है तो सर आप डिजिटल बनाओगे क्यों। नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग रिगार्डिंग दिस वन। आई एम टॉकिंग डिजिटल बीट से व डिजिटल डाटा से आपको डिजिटल सिग्नल बनाना है, इसलिए उसका नाम है डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग। नहीं तो बार बार हर टाइम इंटरव्यू का टाइम में भी पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। ऑलरेडी डिजिटल है, व्हाई यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल। नो, आई एम नॉट कन्वर्टिंग डिजिटल टू डिजिटल, रादर इन ए सेंटेंस को थोड़ा ये करोगे, क्लैरिफाई करोगे। आई एम ट्रांसफरिंग द डिजिटल बीट टू डिजिटल सिग्नल। कैसे बनाओगे, चलो स्कीम देखते हैं। 3 टाइप का स्कीम होता है, यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर। सभी ने ध्यान से देखिए, सभी को बनाना पड़ेगा, अच्छे से समझ लीजिए। यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर, तीनों टाइप। यूनिपोलर नाम से ही पता चल रहा है, पोलैरिटी सेम रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव। पोलर में 2 पोलर में ही रहेगा, पॉजिटिव साइड में भी रहेगा, समटाइम्स आई मीन नेगेटिव आल्सो। बाइपोलर लाइक ऑन ये में 2 पोलैरिटी ये में रहेगा। देखते हैं फर्स्ट वन। तो दिस इज द यूनिपोलर, वेरी सिंपल स्कीम। 0, देखो वोल्टेज इज द 0, दिस इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमने मेजर किया, दिस इज द 0 वोल्टेज, एंड मे बी आई एम कंसीडरिंग दिस इज द +5। लुक एट हियर, 0 बोलने से 0 वोल्टेज में रहेगी, 1 बोलने से सर +5 कर लिए, 0 बोलने से सर फिर 0 में आ जाएगी, 1 बोलने से सर आई हैव टू अगेन कन्वर्ट इट इनटू, आई हैव टू चेंज 0 वोल्ट टू +5 वोल्ट, फिर 0 बोलने से फिर नीचे आ जाएगी। इट इज लुकिंग लाइक इन दिस इज द यूनिपोलर। तो हम आपको कोई एक छोटा सा बीट स्ट्रीम देने से कर नहीं पाओगे, कन्वर्ट कर पाओगे ना, इजी है ये सर। नो, फटाफट बोलो एकदम। यस सर। चलो, दिस इज वेरी इजी, सिंपल। ये वाला यूजुअली वाला हम लोग कभी भी आपको देते भी नहीं है। यूनिपोलर इज वेरी इजी, से 0 बोलने से 0 वोल्ट, 1 बोलने से +5 वोल्ट कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, अभी देखो धीरे धीरे पोलर बोलने से कितना सारी स्कीम आ गई। पोलर में आपके पास एनआरजेड, आरजेड, बाइफेस, 3 टाइप का स्कीम है। मेनली वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट पोलर। तो पोलर में एनआरजेड देख लेते हैं। एनआरजेड का देखो 2 है। एनआरजेड फुल फॉर्म इज द नॉन रिटर्न टू 0, नाम से पता चल रहा है, कभी भी 0 में हमको जाना नहीं था, और +5 में जाना है, नहीं तो -5 में। लुक एट हियर, और +5 में रहेंगे, नहीं तो -5 में रहेंगे, हमने कभी भी 0 में नहीं रहे। दिस इज द 0 वोल्ट, दिस इज द +5, दिस इज द -5। आई नेवर स्टे इन द 0, हमको +5 में रहना है, नहीं तो -5 में रहना है। तो एनआरजेड एल स्कीम, फर्स्ट स्कीम एनआरजेड एल, नॉन रिटर्न टू 0 लेवल। लुक एट हियर, नॉन रिटर्न टू 0 लेवल। तो सर 0 बोलने से +5 से यूजुअली स्टार्ट करेंगे। एनआरजेड एल, एनआरजेड आई में याद रखना, सिग्मा सर ऑलरेडी फर्स्ट डिफाइन कर रहे हैं। 0 बोलने से +5 से करो, 0 आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम +5। सर 1 बोलने से -5, फिर 0 बोलने से फिर +5, 0 है +5 में रहेंगे, +5 +5 रह जाएंगे सर। 1 बोलने से सर -5,
सर 1 में है, -5 में रहिए सर, फिर 1 में है सर, -5 में रह जाइए। 0 बोलने से सर प्लीज स्विच ओवर टू द +5। इसका नाम है नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल। इज इट ओके? यस सर। कंफ्यूजन किसका है बोलो? सिंपल वन। चिन्मय सर फर्स्ट डेफिनेशन बोला, 0 बोलने से +5 में रह जाना, 1 बोलने से -5, -5 में रह गया सर 0, नेक्स्ट बिट इज द 0, सो +5, नेक्स्ट बिट इज द 0 सर, +5 में रह जाओ सर 1, नेक्स्ट बिट यहीं पे खड़ा होकर देखा, नेक्स्ट बिट इज द 1 सर, -5 में जाओ सर, 1 है -5 में रह जाओ सर, 1 है -5 में रह जाओ। लेकिन दिस इनर I non return to zero inverse, non return to zero inverse। तो देखो, इफ समवन इज गिविंग यू दिस वन, हम आपको ये वाला सिग्नल दे दिया, आप इसको कन्वर्ट करके बोल नहीं सकते हो 0 होगा ना 1 होगा, कहाँ पे क्या बीट हमने आपको सेंड किए थे, ये सुन लो, बोल सकते हो? सबको समझ में आया ना, नहीं आ रहा है? बोलो प्लीज। समझ में आ रहे? ये सुन लो। यस सर। चलो हमको ड्रॉ करके, सभी ने हाँ बोला, जिसको पूछेंगे वो आंसर करोगे, डरना नहीं है, आराम से बोलो, बोलने से सीख जाएंगे। देखो प्लीज लुक एट हियर, हमने आपके पास फास्ट इन दिस वन, फास्ट हम देख लेते सर, हमने पहले लुक एट, सॉरी सॉरी सॉरी, को शेयर करना पड़ेगा। एक लड़का, इफ समवन इज ड्रॉ इट लाइक इन दिस वे, जिसको पूछेंगे वो बोलोगे, ठीक है? दिखाई दे रहे? हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। जिसको पूछेंगे वो बोलोगे, इसको पूछ सकते। ये सर शुभेंदु कोशिश करो, बोलो तो, क्या क्या बीट हमने भेजा था, व्हिच बीट आई हैव ऑलरेडी सेंड, डिकोड करके बोलो। शुभेंदु सर क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया सर। हमने बोला इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम, ओके सर। हमने डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसका डिकोड करोगे, तो पहले थोड़ा पहले पढ़ा रहा था ना आपको, एनकोडिंग पढ़ा रहा था। हाँ जी। एनकोडिंग में हमने क्या बोला जी सर, इन दिस वन हमने पहले आपको फर्स्ट लुक एट हियर, तो गॉड एक बार हमने कर रहे, यस हमको क्या कन्वर्ट करना था सर, आपका पास ऐसे था 0 1 1 0 1 1 0 1, ऐसे एक बिट विल प्रोवाइड यू, हम आपको बोलेंगे आप इसको एनआरजेड एल करके कन्वर्ट करो, एनआरजेड एल में इनकोडिंग करो, ठीक है? दिखाई दे रहे? एनआरजेड एल में इनकोडिंग करना है। इज इट ओके? यस सर। ओके, कैसे करेंगे ना सर, पहले हमने ऐसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आई हैव टू ड्रॉ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो। जी। नाउ सब बीट का तुमने बीट इंटरवल ड्रॉ करो, सबका बीट इंटरवल तुमने ड्रॉ करो, जी। सब हार्ट बीट का इंडिविजुअली इंटरवल यू शुड नो, बीट इंटरवल ड्रॉ कर दिया। हाँ जी। सबका बीट इंटरवल तुमने ड्रॉ करो। इज इट ओके? यस सर। अभी जैसे एल्गोरिथम बोला, अकॉर्डिंग टू दैट एल्गोरिथम, सभी ने ध्यान से देखो, 0 बोलने से बोला था +5, दिस इज द +5, दिस इज द 0,
दिस इज द -5. हमको ड्रॉ करने का 0 बोलने से हमने बोला +5 से स्टार्ट करो. हाँ जी 1 बोलने से प्लीज कम बैक एट द -5. नाउ वी कैन चेंज द कलर आल्सो. एट दैट मोमेंट आई कैन चेंज द कलर आल्सो. 0 बोलने से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. 1 बोलने से आई एम कमिंग बैक एट द -5. 1 बोलने से सर -5 में रह जाइए. 0 बोलने से सर +5 में चला जाओ. 1 बोलने से सर फिर -5 में आ जाओ. कम बैक. 1 बोलने से -5. 0 बोलने से सर +5. 1 बोलने से सर -5. Like this. हाँ जी अभी समझा. In the exam time, I'll give you this bit sequence. I'll ask you to draw this diagram. कर पाओगे? Yes or no? Yes. यस सर. बस इतना ही हम आपको बोलेंगे. Now this is I have already encoded. केवल हमने आपको encoded करके दिया. अभी आपको जब रिसीवर रिसीव करेगा, they will receive this signal. इस सिग्नल को रिसीव करेगा. हाँ जी Yes or no? Yes. सिग्नल को रिसीव करेगा. यस सर. सिग्नल को रिसीव करने के बाद फिर डिकोड करना पड़ेगा. आई हैव टू डिकोड इट. हमको डिकोड करना पड़ेगा. हाँ जी हमने जस्ट इन दिस वन आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दिस वैल्यू. आई एम रिमूविंग ऑल दिस वैल्यू. रिसीवर रिसीव्स दिस सिग्नल. Yes. Receiver receives this signal. You ask me what is the value. You look at here. You say this is the +5. This is the +5. So at the receiver end, you can say that this is the 0. So this is the -5. Yes or no? This is the -5. So I am saying this is the 1. Are you agree with me? यस सर. So this is also -5. So I am sure this is the 1. So this is the +5. I am sure this is the 0. Yes. So this is the -5. So this is the 1. So this is the -5. This is also 1. This is the +5. So this is 0. Yes. At the receiver end also I will able to decode this one. Encoding भी कर पाएंगे. आपको 0 0 1 0 if I am giving you, and if I am giving you the signal that you can decode also. Yes or no? Yes. Yes. So this Yes, is the sir. first technique. टेक्निक का नाम क्या है? एनर्जेड एरर. Is it okay? Can you understand me? Yes, sir. Understood this. Okay. The next one, next scheme. यस सर. अंडरस्टूड सर. The next scheme is that energy I. Non-return to 0 inverse. Non-return to 0 inverse. In this scheme, please look at there is some one hints I have given. In this one, I have to make some transition. If next bit is 1, listen my words. Only there is a next bit is 1, when I will find there is a next bit is 1, then there will be one transition. तो देखो से 0 था. This is the +5. इसके बाद हमने देखा नेक्स्ट बिट क्या था? 1 है. 1 है. So there will be I have to convert, I have to change it. -5 में आ गया. 1 होने से आप ट्रांजिशन करोगे. कैसे ट्रांजिशन? लिसन में एकदम अच्छा ध्यान से मेरा बात सुनो. +5 में रहोगे तो -5 में आ जाओ. कम बैक एट द -5. और इफ यू एट द -5 देन प्लीज स्टेप अप करो एंड यू रीच एट द +5. ट्रांजिशन मीन्स दिस वन. आप +5 में रहोगे तो -5 में वापस आ जाओ, और -5 में रहोगे तो +5 में जाओ. दिस इज द ट्रांजिशन. लुक एट हियर. दिस इज 1. उसलिए हमने देखो फॉर दैट पर्पस आई हैव मेड ए ट्रांजिशन. +5 से -5 आ गया. से दिस इज 0. दिस इज 0 इन दिस टाइम. एक्चुअली हमने देखो ये में थे 0 पहले बार था +5 में, क्योंकि इस बार हमने कुछ ट्रांजिशन नहीं करेंगे. नो, देयर विल बी नो ट्रांजिशन. 0 नो ट्रांजिशन. सर 1 बोलने से आप ट्रांजिशन करो, स्विच ओवर करो.
-5 में था, +5 में आई एम नाउ हियर। इसके बाद फिर 1 था, सर +5 में है, -5 में आ जाओ। नेक्स्ट 1 इज देयर, सर -5 में था, +5 में आ जाओ। It look like in this. So this scheme is the energized eye. Name of the scheme is that energized eye. कब ट्रांजिशन करोगे ना, जब आपका पास 1 आएगा, अदरवाइज नो। देखो आई एम टेकिंग ए स्कीम 0 0 1 0 1 1 0 0 1। लुक एट हियर, सभी को दिखाई दे रहे? अच्छा हमने व्हिच स्कीम आई हैव टू ड्रॉ? सर हमने अभी ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं एनर्जेड आई। एनर्जेड आई को ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। फर्स्ट ड्रॉ द sorry, first draw this one. Please draw all the bit interval. This is very important. First you have to draw the bit interval. First I have to draw the bit interval. Using the dash line I have to represent this one. So this is the time, x-axis. This is the amplitude, y-axis. Is it clear? Yes. एनर्जेड आई, इसका नाम है नॉन रिटर्न टू जीरो इनवर्स। जीरो बोलने से नाउ आई हैव टू जस्ट चेंजिंग द कलर। नाउ एनर्जेड आई, जीरो बोलने से सर +5 से स्टार्ट किया। जीरो, नो ट्रांजिशन, जैसे है ऐसे रह जाओ, डोंट चेंज इट। दिस इज द नेक्स्ट बीट इज द 1, नेक्स्ट बीट इज द 1। नाउ आई हैव टू मेक ए ट्रांजिशन, आई हैव टू मेक ए ट्रांजिशन। Sir, 0, next bit is the 0, no transition, stay here। 1, sir there should be some transition, you are in the -5, please go to the +5। Sir, next bit is the 1, next bit is 1, so there will be 1 transition। Sir, next bit is the 0, no transition, next bit is the 0, no transition, 1। Getting me? Yes. Yes, sir. सबका हाँ सुनाई नहीं दे रहा है, एक दो का हाँ सुनाई दे रहा है। Only 1 or 2% are saying yes, sir. R Mohan, yes Aman, Yes, sir. Subhendu, everyone able to understand? Yes, sir. Clear. Okay, so this name of the scheme is that energized eye, non return to zero inverse। एक ही चीज याद रखना पड़ेगा सर, only one line I have to remember। Sir, in this one, sir, there will be a transition if next bit is the 1। जब भी next bit आपका 1 रहेगा तब transition करो। This is the return to zero. The name of the scheme is the return to zero, RZ scheme। देखो नाम से ही पता चला है, पिछले बार बोला था नॉन रिटर्न टू जीरो, इस बार हमने बोला रिटर्न टू जीरो। नेम ऑफ द स्कीम इज दैट रिटर्न टू जीरो। ठीक है, सभी ने ध्यान से देखो। फर्स्ट हाउ टू ड्रॉ इट, हमने ड्रॉ कर रहे, ड्रॉ करना है, आप देखो ठीक से, एक बार देखोगे तो समझ, यू विल एबल टू गेट इट। Sir, I am taking digital to digital conversion, so I am using something like in this one. Some digital bit is there, I have to convert it. It will look like in this one. It will look like in this one. It will look like in this one. Is it okay? yes Yes, sir. This is the time, this is the amplitude. Now I have to start. याद रखना, for each bit interval,
और ईच बीट इंटरवल फर्स्ट पहले आप ड्रॉ करने के टाइम में ऐसे करके हाफ को ड्रॉ कर लो, सेकेंड हाफ देखो पूरा हाफ का ओनली दिस पूरा, दिस इज द सेकेंड हाफ, दिस इज द फर्स्ट हाफ, दिस इज द सेकेंड हाफ, दिस इज द फर्स्ट हाफ, दिस इज द सेकेंड हाफ, सो ओनली ड्रॉ इन द सेकेंड हाफ, ओनली ड्रॉ द सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ को ड्रॉ करो, सेकेंड हाफ का आप ड्रॉ कर दो, सेकेंड हाफ का ड्रॉ कर दिया। नाउ आई हैव टू ड्रॉ द लाइन for 0 usually I have to start from here. For the RZ scheme 0 usually starting from the -5, 0 is starting from -5, 0 -5 से स्टार्ट होगा। देखो लुक एट हियर, हमने -5 से स्टार्ट करके ऐसे कर लिया, 1 0 बोलने से सर -5 में आओ एंड कनेक्ट इट, सर 1 बोलने से +5 एंड कनेक्ट इट, 1 बोलने से +5 एंड कनेक्ट इट, 0 बोलने से सर -5 एंड कनेक्ट इट, 1 बोलने से सर +5 एंड कनेक्ट इट, so this is next is the 1, so +5 and connect it, next bit is the 1, so connect it, so 0 -5 and connect it, sir 1 +5 and connect it, getting or not? यस सर। सबको समझ में आया है? सभी को समझ में आया है आपको? एवरीवन, एनी कंफ्यूजन? शुभेंदु, अमन, any confusion? नो सर। So name of the scheme is the RZ. RZ, R stand for return to 0. In the last time I have already defined. Last time I have said no, non-return to 0. But in this time, every time I have to return to 0. This is the +5. This is the +5. This is the 0. This is the -5. Every time I am returning to 0. The name of the scheme is that. So name of the scheme is RZ. RZ scheme, return to 0. Every time I have to 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 return. So this is the return to 0, RZ scheme. Okay. Yes, sir. Okay, this is there is another 2 scheme in the digital actually. There is one is the Manchester's and another one is the defensive Manchester's. One scheme is the Manchester scheme and another one is the defensive Manchester scheme. In the assignment also every time you will find that they are giving the Manchester's and the defensive Manchester's. This scheme actually in the real life at this moment also we are doing some digital to digital encoding. In the digital to digital encoding in the real life, we are using these Manchesters and the defensive Manchesters. At this moment, if I am transferring all my audio signals and that one, I have to convert it into digital, and then I have to transfer it the digital signal. Then actually we are using the Manchesters and the defensive Manchesters. Real life in the computers. But in the all the other schemes that we have already discussed, that is also important. In the number of applications we are using the RZ, sometimes I need it. Sometimes I need NRZL and NRZI, and sometimes I need this one, very simple one. Yes. Sir, one question. NRZL stands for? I am not able to get your question. In NRZL, L stand for like NRZI, NRZ inverse, right? For NRZL, L stand for left or what?
energy L, L stand for? level. Sorry? Non-return to zero level. Level. Uh, Okay. Thank you. Non-return to zero level and non-return to zero inverse. Okay. Energy L and energy I. Mhm. Thank you. Okay. Okay, in the Manchester's and defensive measures, in the next class tomorrow we can discuss. Sure. Okay, sir. Yes, sir. Okay. Okay, then I am going to मीटिंग खत्म कर रहे हैं, उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल इस टाइम में क्लास रहेगा 7 to 8। जी सर, ओके। ठीक है यस सर। विजय, अभी बंद कर दे रहे। हाँ सर, बंद कर दीजिए। हाँ विजय जी, एक बात पूछना था। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। अच्छा, ये जो असाइनमेंट जो है, हाँ 4th सेमेस्टर का असाइनमेंट, ये 15 हाँ तारीख लास्ट डेट है ना? हाँ 15 तारीख लास्ट डेट है। अच्छा, और एक हमारा MCS 36 में एक प्रॉब्लम हुआ था, 36 का लैब रिकॉर्ड्स में। हाँ उसको हमको और एक बार सबमिट करने के लिए बोले थे। सबमिट कर दीजिए। जी, वो 31 दिसंबर बोले थे, मैं थोड़ा कर नहीं पाया। वो भी 15 के नहीं, अंदर करने से चले। डेट चेंज हो गया, सबमिट करने का डेट चेंज हो गया। ओके, अच्छा, तो 15 होगा, 15। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू ओके जी। ओके भाई, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ठीक है विजय, और कुछ बोलना पड़ेगा हमको? नहीं सर, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा 7:30 बजे। मैं मैसेज कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके 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 सर। बाय। ओके सर, थैंक यू सर।